So, in the last class, we discussed about equilibrium of an object. And when do we say that an object is in equilibrium? When the net force and net torque acting on the object is equal to 0. Right? This is what we learned in the previous session. Today, I'll give you an idea about moment of inertia. Okay? I'll give you some idea about moment of inertia and how to solve problems involving moment of inertia. ठीक है? We will do derivations also. वो देखेंगे, ठीक है? So, moment of inertia. First of all, Vaishnavi ji, tell me what is inertia? Sir, inertia says that an object does not change its state of motion unless an external force acts upon it. Arush Datta, you want to improvise it? I don't actually know any derivation. हाँ? सर क्या मुझे बोला? पता नहीं इसके बारे में. Inertia नहीं जानते सर आप? इम्प्रूव नहीं कर सकते. Inertia नहीं सर जानते इनर्शिया आप? जानता हूँ. हाँ, तो inertia की बात हो रही, बोलिए ना आप. क्या होता है inertia? आपके हिसाब से क्या होता है? What is inertia? Inertia is the movement of an object which can be definition से नहीं पता. So, moment of inertia. Inertia is a property of an object which resists the change in its momentum. Inertia is property of an object which resists the change in its momentum. So, what is moment of inertia? Moment of inertia is a property of an object which resists the change in its angular momentum, which resists the change in its angular momentum. Angular momentum is given as capital L, right? We will discuss this in great detail, but before that, just remember this, that moment of inertia is a property of an object which resists the change in its angular momentum. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Now, Yes. how is moment of inertia given? How is moment of inertia given? We will write it as capital I. Collision में we wrote impulse as I vector, right? I vector था वो. Impulse को मैंने collisions में I vector लिखा था, यहाँ पे सिर्फ I लिख रहा हूं. ठीक है? So please notice the change. So this is moment of inertia. So moment of inertia is, as I explained, it is given as the property of an object which resists the change in its angular momentum. So let's suppose that an object is, and since we are discussing rotational mechanics, so let's suppose that an object is rotating on this axis. The mass of the object is m and the radius of this object is r. Sorry, this circle is r in which it is rotating. The yellow line is the axis of the circle. Moment of inertia of this object, moment of inertia of this object about this axis of rotation is given as I, and that will be given as mr square. So it is the product of mass and the square of the radius of the orbit, circular orbit in which it is rotating. Clear? Similarly,
Similarly, if I have another object rotating on this axis, on this orbit, and let's say the object is this object. ठीक है? This is rotating with the radius is r1, mass is m1, the moment of inertia is I1, and this is say m1, this will be m1 r1 square, right? Understood how it is given? Moment of inertia, mass of the object multiplied by square of the radius of the circular orbit in which the object rotates. Clear? Now, Yes, sir. please pay attention. If mass m is rotating in anti-clockwise sense and mass m1 is rotating in anti-clockwise sense, right? Let's take one more object. This is m2, this is r2, and I2 is, we'll write it as m2 r2 square, right? Now this object, the above two objects are rotating in anti-clockwise sense. This object rotates in clockwise sense, and let's say it is again, sorry, it's rotating in clockwise sense. Now, if I ask you, if we want to see what is the net moment of inertia of all these objects taken together. So the system is now comprises of all these objects. So moment of inertia I net for all these objects will be, we have to choose one direction of motion as positive, the other one as negative, right? One sense of rotation as positive, the other sense of rotation as negative. So I am choosing clockwise sense as positive, anti-clockwise sense as negative. So here the moment of inertia will be I2 minus I minus I1. I am choosing clockwise sense as positive, anti-clockwise sense as negative. So I1 and I are negative and I2 is positive. So the final moment of inertia of this three particle system will be m2 r2 square minus m1 r1 square minus m2, sorry, minus mr square. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts in this? If you have any doubts, please ask. No, sir. चलो 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, तुम लोग लिखो. लिखिए इसको जल्दी से आप लोग. Yes, sir. लिख लो. लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया? हाँ. Yes, sir. सर एग्जाम्पल भी लिखना है क्या? कौन सा एग्जाम्पल? सर आपने नीचे जो डायग्राम बनाया है. अबे जो इस स्लाइड में है सब कुछ लिखना है. तुम मतलब कौन, क्यों मेरा दिमाग तुम लोग यार पचाने लगते हो बे? सब लोग सबका इतनी जल्दी हो गया तो फिर
अरे तुम सबसे क्या मतलब है भाई? तुम अलग आदमी है, वो अलग है। जो भी स्लाइड में लिखा है सब कुछ लिखना है। क्या यार, मतलब इतने दिन में तुम लोग once you are done with it, please type done, okay? Or do let me know. आरुष जी, हो गया आपका काम कि नहीं हुआ है सर? सर लास्ट चीज लिखना। लिखिए लिखिए। डन सर। Okay. So now, first statement of this slide. मतलब, not this slide. First statement for moment of inertia. Please remember it, okay? Moment of inertia of an object never changes or does not change of an object does not change if the distribution of the mass about the axis of rotation remains unchanged. Moment of inertia of an object does not change if the distribution of the mass about the axis of rotation remains unchanged. ठीक है? So let's see what does it mean. Suppose करो this is the axis of rotation. So it's a dot, right? So the axis is piercing through this plane of the figure. Okay? And the object rotates in this circular path. The object rotates in this circular path. Mass of the object is m and the radius of the circular path is r. So what will be its moment of inertia? It is rotating in clockwise sense. So what will be its moment of inertia? I is equal to mr square. Yes or no, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now,
Now, if I distribute this mass as m by 2 and m by 2 on this circle only, what will be the new moment of inertia of these individual objects? M by 2 r square. Let's write this as object 1, this as object 2. So I1 will be m by 2 r square. I2 is m by 2 r square, right? Yes. जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? m r square. Yes or no? Yes, So sir. it didn't change, right? पहले भी वही था, अभी भी वही है ना? The Yes, only sir. though we have distributed the mass. फिर यहाँ पे क्या होगा? This is m by 2. This is m by 2. Sorry, not m by 2, m by 2. This is all m by 4 now. m by 4, m by 4, m by 4. ठीक है? So 4 equal. अच्छा, symmetrically place नहीं भी करोगे. Even if you place it here, then also moment of inertia remains as it is. M by 4 r square plus m by 4 r square plus m by 4 r square. Yes or no, all of you? Understood or not? Say yes or no. Yes. Yes, sir. So now I'll do one more thing. If I spread this mass on this ring. So the ring becomes, so the mass is spread over the entire circular path of radius r and it becomes a ring of radius r, right? ये mass m, radius r. Since the distribution of mass has not changed, moment of inertia is how much? It's mr square. Yes or no? Yes, Hello. sir. So you can see that moment of inertia, this proves that moment of inertia of an object does not change if the distribution of the mass about the axis of rotation remains unchanged. This is, you can equate these two together. It's the same orientation of mass, right? I hope all of you understood this. Please write it quickly. सर हाँ, एक सवाल था बोलिए बोलिए. सर एप्लीकेशन क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अभी तो शुरू ही किया है संभव जैन सर, अभी आएगा सर. आप जब लिखते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, लिखवाया था ना मैंने आपको यस पिछली सर क्लास में, पिछली क्लास में जब टॉर्क सिखाया था मैंने यस आपको, सर याद है कि नहीं है आपको? यस सर I taught you two equations of torque. Tau is equal to R cross F and tau is यस equal सर to I alpha, right? यस तो rotational, तो angular acceleration निकालने के लिए what do we need? Moment of inertia. यस सर So Yes. जैसे laws of motion में force होता है, वैसे ही torque में moment of inertia होता है. Sorry, वैसे ही rotation में जैसे laws of motion में mass होता है, वैसे ही rotational mechanics में moment of inertia होता है. It is analogous to mass. ओके सर लिखिए इसको.
हाँ भाई, डन। यस सर। सर वन लिखो लिखो और लिखो। सर ये सेकंड डायग्राम में m/4 था, उसमें I इक्वल्स टू mr², फिर I1 इक्वल्स टू m/2r² और I2 भी वही था, वो समझ नहीं आया मुझे। क्या बोला तुमने? सर जो सेकंड डायग्राम है राइट साइड पे, उसमें 3 इक्वेशंस दे रखे आपने। नहीं, मैंने I मैंने उसके 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए थे। पहला एग्जाम्पल था जब वो पूरा m था। तुम सुनते नहीं हो बेटा ध्यान से, इसीलिए तुमको मैं गरियाता रहता हूँ क्लास में। कोई कारण नहीं है, और तुम ध्यान से सुनो। पहला एग्जाम्पल था ये, दूसरा एग्जाम्पल था ये, तीसरे का मैंने इक्वेशन ही नहीं लिखा, वो सिर्फ बोला था मैंने। ठीक है। तीसरे को मैंने बोला कि अगर हम तीसरे बार में हमने लिखा, 4 बार में चार चार भाग बनाया इसका, इसको मास m को आई डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। हेलो। यस सर, आता यस सर, यस। तो ये m/4 r² होगा। I2 भी यही होगा, I3 भी यही होगा, और I4 भी यही होगा। समझ आया बेटा? तो आई नेट क्या ओके, हो जाएगा हरुष यस सर, दत्ता जी? इन सब का सम, तो ये क्या कितना मिलेगा? mr m/4 स्क्वायर, m बाय यस आर स्क्वायर आएगा। mr², ये मैंने बोला था उस यस समय, आप सुनेंगे तब तो ना। उसके बाद फिर मैंने आपको यस यहाँ पर ऐसे ये स्प्रेड करके दिखाया कि पूरा रिंग में स्प्रेड कर दूंगा तो क्या होगा, तो वो भी हमारे स्क्वायर होगा। तो ये प्रूव करता था, ये शो किया मैंने कि ये स्टेटमेंट हमारा सब तरफ से सब सही है, इवन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट और इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? यस सर, क्लास में मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। 1 घंटे में मैं सिर्फ 2 लाइन लिखी है मैंने, अभी आधे घंटे में दो दो स्टेटमेंट लिखे मैंने, वो भी तुमको नहीं समझना है। चलिए आगे, चले आगे। यहां से लिखा आरुष तुमने? यस सर। लिख लिया बेटा? ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है। So let's derive some moment of inertias of continuous bodies. फर्स्ट है रिंग, moment of inertia of a ring about its axis of rotation. ठीक है। So we have a ring like this, right? I want to find its moment of inertia about its axis passing through its center. So mass is m, radius is r. I take a small element here. I take a small element here. Let's call this element as dm. Okay. The radius of this ring is r, and the ring is rotating. The ring will rotate about its own axis, right? So ये यहाँ rotate कर रहा है, ठीक है। So what is moment of inertia of this small dm? Di will be dm into r square. Yes or no? All of you.
Yes, sir. Now remember, mass is uniformly distributed. We are discussing only those objects where mass is uniformly distributed, right? So I will be, Arush, we are discussing only those objects where mass is uniformly distributed. Understood? So Yes, remember sir. it. Continuous body. So integral of di is from 0 to I, and this is integral of dm into r square, 0 to capital M. Now integral of dm is capital M. This is mr square. This is I. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes. So this was about ring. Let's see, second case is moment of inertia of a rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length. Okay. Again, remember, we are discussing only those objects where mass is uniformly distributed. I'll write it here. Actually, बार क्या है ना? Continuous bodies having uniform mass distribution. ठीक है? So we have this rod here. Please pay attention, all of you. This is the rod which we have. And we want to find its moment of inertia about this axis. Element क्या लेंगे बेटा? मास इसका कैपिटल M है, लेंथ इसका कैपिटल L है, ठीक है? Mass is capital M, length is capital L. Now mass is uniformly distributed, right? So let's see, lambda is what? Mass per unit length. That is linear mass density. Lambda is linear mass density. You are aware of it. पता है कि नहीं सबको ये? Yes, sir. Yes. So we take a small element here. We take a small element of the rod here at a distance of x, and ठीक है? So this is dx, this is x, and this is dm. So dm will be what? Dm is mass of this small element of length dx. Dm will be what? Lambda into dx, or it is m dx upon L. Clear? Now this rod rotates. I am rotating it in anti-clockwise sense. So di is equal to dm into x square. So it is m by L x square dx. This is di. Now you integrate it from 0 to I, and x is varying from, this is origin, right? x कहां से कहां तक वैरी करेगा बेटा? पूरे रॉड को कवर करने के लिए कहां से कहां तक वैरी करेगा? बताओ जरा मुझे. वैष्णवी, tell me, x will vary from which point to which point to complete the Sir, entire 0 rod? to L. Hmm? 0 to L. एक बात बताओ, 0 कहाँ है? बीच में. बीच में. राइट में कहां तक रॉड है? L/2 तक. उसके आगे तुमको कुछ दिखाई दे रहा है मास? नहीं. तो फिर कैसे उसको तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इंक्लूड कर लिया एक्स में?
तो सर हम लिमिट लिमिट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात हुई है या नहीं हुई है? पहले ऐसा तो है नहीं कि पहले देखा नहीं है तुमने। नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। देखा होगा तुमने, जब इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो वहां पे है नेगेटिव लिमिट्स भी। हाँ तो सर नेगेटिव L/2 टिल L/2। वेरी गुड, इसीलिए तुमको मैंने पकड़ा। तो यह है -L/2 से लेके +L/2 तक। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m/L। एक मिनट, ये क्या हुआ? d/m जो था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, m/L इंटीग्रल होगा x³/3। आरुष समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m/L, 3 बाहर निकाल लो। दिस विल बी L³/8 माइनस ऑफ -L³/8। सो I इज कितना हो जाएगा? दिस विल बी L³/2L³/8। तो ये हो जाएगा mL²/12। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। यस और नो? यस सर। एनी डाउट्स एनीबडी? If you don't have any doubts, please write it quickly. लिखिए।
सर लिख लिया। हो गया? डन? नोटेड ऑल ऑफ यू? सर थोड़ा आरुष देर। लिख ले बेटा, आराम से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू जब लिख ले तो बोलना हो गया सर, ठीक है? डन लिखना तब। Done, sir. चलिए, सो दिस वाज अ रॉड, है ना? चलो, अब मैं तुमको ना एक रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना सिखाता हूं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो हमने ये पढ़ा था, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rectangular plate about an axis passing through perpendicular to one of its sides and passing through the center of the plate, सॉरी, है ना? इसकी बात हम करेंगे। आइए देखते हैं। तो दिस इज द प्लेट, ओके? दिस साइड इज B, this side is L, mass is capital M. Again, mass is uniformly distributed, right? देखना है ध्यान से जो करने जा रहा हूं। This is the axis of rotation of this plate. It is perpendicular to one of the sides, that is length, and it is passing through the center of the plates. तो इसके अबाउट इसको रोटेट करवाना है, ठीक है? Just pay attention. If I reduce it like this, what does it look like? चलिए आरुष जी बताइए, what does it look like? So it looks like a line. Rod, Yes, sir. है ना? तो रॉड sir, का rod. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है आरुष? इस एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू इट सेंटर, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द रॉड है ये, तो इट विल बी Yes, ml sir. स्क्वायर बाय 12। अभी पढ़ा हम लोगों ने, Yes, sir. यस और नो? तो नाउ आई अगेन
bring it back as a plate. And now I'll derive it using the concept, taking a small element and doing everything, doing those stuff, right? So let's take a small element here. Let's take a small element dm. ठीक है? At a distance this is dx. What is sigma? Sigma is m upon L into B. Sigma is mass per unit area, right? This is dm. The dm of this element will be sigma into, what is mass of this gray element? Arush, बताओ, what is mass of this gray sigma element? into dx. Sigma into dx. नहीं 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 नहीं, एरिया है ना बेटा ये. This is mass per unit area. So we have to take area of this gray strip. What is area of the gray strip? Sigma into dx into b. Yes, sigma into b into dx. This becomes m by L into b dx. B cancelled out. This is m by L into dx. I hope all of you understood this. This is dm, right? Now, this dm is rotating about this axis in a radius of, every particle on this dm is rotating about this axis in a radius of, in a circle of radius x. Yes or no? Yes or no? हाँ ना बोलो जल्दी से. नहीं सर, Yes, आप sir. अपना स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा इस ग्रे स्ट्रिप पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब एक्स रेडियस के सर्कल पे रोटेट कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ हाँ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे डीएम का क्या हो गया? डी अबाउट दैट एक्सिस इज dm into x square, and this is again m by L x square dx. Clear, all of you? Yes, sir. So I is integral of di from 0 to I. This is m by L integral of x square dx from minus L by 2 to plus L by 2 again. Again this comes out to be ml square by 12. डेरिवेशन से भी वही आया और वो शॉर्टकट से भी वही आया था, जो स्टेटमेंट था वो वाला. आया कि नहीं आया इससे? हाँ ना बोलो बे. Yes. Yes, sir. यस सर. मुंह में दही जमा रहता है क्या बे तुम्हारे? हाँ ना भी नहीं बोलना आता है. अगर ये समझ में आया है तो लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे. आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स.
हाँ भाई, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब देखिए, इसी में मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। प्लीज पे अटेंशन, हाँ, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। सपोज करो दिस इज योर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट। This is one axis. This is another axis passing through its center and perpendicular to one of its sides. There will be only two axes, right? Which will be passing through the center of the plate, and this is length L, this is breadth B. Now suppose I make it a rod like this. What is length of the rod? B. B, right? So moment of inertia of this rod about this axis of rotation is, let's write it as Ix. This is along x-axis, this is along y-axis. So this is mb square by 12. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And about this axis is iy is ml square by 12. सिंपल है बेटा, समझ आया सबको? हाँ सर. Yes, sir. लिख लो इसको भी। तो ये वो कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया मैंने तुम्हें, उसको यूज करना सीखो, वो तुमको काफी हेल्प करेगा, ठीक है? बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी तुमको। प्लीज मेक नोट्स। चलिए. चलिए, so if you have noted it, तो एक क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करिए अब, ठीक है? फिर आपकी छुट्टी। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, येलो बना लेते हैं। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, this is rod of mass m, length L, and this rod is inclined at an angle theta. The rod rotates about this axis in anti-clockwise sense. Right? So when this rod will rotate in anti-clockwise sense, कैसे ये कितना कैसा वो बनाएगा, ये कैसे रोटेट करेगा ये? This line will rotate in this circular, this point will rotate in this circle. Yes or no? हाँ या ना Yes, बोलो sir. भाई। Yes, तो sir. हर एक Yes, sir. तो ये कोन टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पे, है ना? रॉड को अगर तुम बहुत तेजी से रोटेट करोगे इस टाइप से, तो इट विल क्रिएट अ कोन टाइप स्ट्रक्चर और अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अ हॉलो कोन, और यू कैन से अ फनल। देखा है ना फनल आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. So now mass is uniformly distributed. Would you like to solve it? All of you. करो, would you like to solve it? नहीं, you don't have a choice, you have to solve it. करिए। This is first exercise for all of you. Do it.
सर मुझे आंसर मिल गया। हाँ भाई, डन। यस सर। चलो, तो क्या आंसर आया आपका संभव जैन जी, बताइए। करण हुआ है। हाँ हाँ। सर हुआ। तो फिर डन कैसे बोलता है? तो मैंने नहीं बोला आरुष को। आरुष जी बताइए, कैसे किया सर आपने, क्या आंसर आया आपका? सर L³/3 sin³ है। ओके, वेरी गुड आरुष, कुछ तो करने की कोशिश की तुमने। L³/3 साइन क्यूब क्यूब थीटा, थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ना आरुष? यस सर। यस सर। अच्छा आरुष, एक बात बताओ, इधर देखो, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, देखो तो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा या नहीं? यस सर। अब तुम देखो, तुमने जो निकाला क्या उसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किसका यूनिट है मीटर क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम। वैष्णवी तुमने क्या किया? सर मुझसे नहीं सॉल्व हुआ। देखो तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें बताओ, पहला स्टेप क्या था इस वाले में, इस रॉड में, पहला व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई डिड? छोटा पार्ट लेना और फिर उसका छोटा मास पार्ट ढूंढना। लेना है। तो छोटा पार्ट क्यों नहीं लिया तुमने, बताओ मुझे। वो लिया मैंने, पर मैं हाँ, अभी कंफ्यूज अभी कहाँ हो गई हाँ कि रेडियस क्या लेना है, क्योंकि हाँ रेडियस तो वेरिएबल है। हाँ, तो तभी तो इंटीग्रेशन होगा, बिना वेरिएबल के इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो हाँ अभी इधर पर आओ, छोटा पार्ट कहाँ लिया तुमने, अलोंग द लेंथ लिया या ऐसे ले लिया तुमने? अलोंग द लेंथ लिया। अलोंग द लेंथ लिया, तो मान लेते हैं ये छोटा सा पोर्शन लिया तुमने अलोंग द लेंथ, लिया ना? हम्म। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब उसका मास ढूंढना है डीएम। तो अभी रुको अगर रुको, वो ये डीएक्स। छोटा पार्ट जो था, ये एलिमेंट जो था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे था, हाँ या ना? हाँ ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, और कुछ तो नया नहीं लिख सकती इसमें। मैं कोई और दुनिया में इसके हजार लिखने के तरीके हैं, उसमें से एक यूज तो नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज, देयर इज ओनली वन मेथड बाय विच आई कैन सॉल्व दिस। सो दिस वाज द रेफरेंस पॉइंट, this was the reference point, and from here the distance of this small particle was x, the length is dx. डी। Clear कि नहीं है? हाँ Now what is, so lambda is linear mass density, तो लिखना ही पड़ेगा, so it is m by l, yes or no? यस। ठीक है, so what will be dm then? एम एल एम बाय एल डी एक्स। Lambda into dx, so it is m by l dx. अब बताओ वैष्णवी, ये तुमको समझ आया कि नहीं, क्या करना है इसमें? हाँ सर, इधर तक सॉल्व कर लिया था। कहाँ कर लिया था, ये तो तुमने बताया ही नहीं मुझे अभी तक, मैंने बताया पूछता जा रहा आपको। हूँ। इधर अच्छा तक चलो, सॉल्व कर लिया। चलो, अब बताओ, ये जो तुमको छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है, वो इस सर्कल पे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? हाँ सर, ढूंढ रहा है। अब बताओ, इस सर्कल का रेडियस तुम लिख सकती हो या नहीं लिख सकती हो, इन टर्म्स में, एक्स थीटा, इसके टर्म्स, थीटा तो कांस्टेंट दे रखा है तुमको, बताओ रेडियस लिख सकती हो कि नहीं? एक्स। सोचो, हाँ बोलो बोलो। एक्स हाँ क्या? साइन थीटा। हाँ, खत्म हो गया ये, एक्स साइन थीटा। अगर दिमाग लगाओगी तो काम जरूर होगा तुमसे, नहीं लगाओगी, उसको अलग से गिरा के रख दोगी जमीन पे और कहोगी चल काम करेगा वो? भाई वो जहां लगाना है उसको भेजे में लगाओ उसको पहले। आ रहा है आंसर। सर अब बताओ इस डीएम, अरे आरुष दत्ता जी रुकिए, पहले अब इनसे बात करेंगे। डीआई की वैल्यू क्या आई है बताओ, उस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आरुषि, सॉरी आरुषि बोल रहा हूँ, वैष्णवी। एम डी एक्स बाय एल मल्टीप्लाइड डीएम इंटू बाय आर स्क्वायर, डी एम इंटू आर स्क्वायर। हाँ। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, क्या आएगा, एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा, दिस इज डी आई, so this is m by l sin square theta into x square dx. Clear? This is di.
Yes. Zero to I. Now x is varying from which point to which point? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बोलो, लिमिट की क्या होगी वैष्णवी यहाँ पर? 0 से m तक, एल तक। हाँ, 0 से L तक। तो यहां से मुझे मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m/L साइन स्क्वायर थीटा इंटू L³/3। लिमिट लगाने पे ये आएगा। सो दिस इज mL² साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। हाँ आरुष दत्ता जी, अब आप बोलिए। सर मैं बोल रहा था, मैंने हाँ एक गलती बोलिए। कर दी वहाँ पे। m क्या by गलती? l नहीं, मैंने m by l को इंटीग्रेशन स्टेप में नहीं डाला था डीएम में। हाँ तो डालना था ना, तो भी यस साइन सर। क्यूब थीटा नहीं आता बेटा, हाँ सर, थैंक यू। है ना? तुमको ये समझ में आया? इसका इसको करने का एक ही तरीका है, इसके 2 3 4 तरीके नहीं है। सिंपल है, देखो, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप। You have to choose an element, the moment of inertia of which is already known to you. We have already done these derivations in center of mass, these type of derivations. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, डेरिवेशंस को 10 बार करो, तुम्हारे दिमाग में ना वो ऐसे छप जाना चाहिए कि साला यही लेना होता है। दिस इज द एलिमेंट विच वी हैव टू चूज। अंडरस्टूड? द एलिमेंट Yes. शुड बी सो चोजन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ विच इज ऑलरेडी नोन टू अस। Yes. क्लियर? लिखिए इसको। संभव जैन, आपको समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर आगे। इसको लिखो, एक आखिरी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर तुम लोग की छुट्टी है। बैठो बैठो, पढ़ो आज। स्कूल है क्या कल? हाँ। नींद आ रही क्या? नहीं, बस अब खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। अरे रे रे रे, जा जा जा, खाना खा बेटा, खाना खा। 9 बजे खाना नहीं खाते हो तुम लोग क्या? सर खाना मैंने भी नहीं खाया। मैंने भी नहीं खाया वैसे खाना, तो जाओ खाना खाओ। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, लिख बाद लिया सर। में- ठीक है आरुष, जाओ जाओ तुम। वैष्णवी जाओ, संभव तुम भी जाओ खाना खाओ। तुमने खाया आरुष खाना? हाँ सर। चलो गुड, तुमको लिखना है लिख लो, नहीं तो वी विल एंड दिस सेशन। बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक्स। तुम रुकना आरुष, मैं तुमसे बात भी करता हूँ। डन सर।